Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So basically in this video we will discuss here if you are a fresher, if you are preparing for the CAT for the first time, या आप repeater भी हो but you haven't scored very good marks in the quant section, या quant is one of the areas जहाँ पे आपको बहुत challenges face करने पड़ रहे हैं. So I will discuss the complete strategy right from beginning. आप repeater हो, आप zero से start कर रहे हो, you can definitely go for this strategy, right? So the name is ki how you can beat the quants and how you can reach from 0 to 99 in the quants, right? So giving little intro about myself, my name is Pallav Goel, and those who are new, right, they might not know me, right? So my name is Pallav Goel, and currently I'm a PGP2 student, second year student at IIM Ahmedabad, right? I have appeared for the CAT, I think 5 times now, right? 3 times as a student, and after that 2 times, 2024 and in 2023 as a student of IIM Ahmedabad, right? I love taking the exam, so I take CAT and ZET every year, and a lot of times I think every time I scored 99.5 plus at least in the quant section, right? And majorly I score around 99.9, right? And so in the CAT 2024, I scored. So I mean, uh, in the CAT 2024, I scored 99.89 overall, and in quants also I scored 99.89 to be precise, right? And I have scored multiple times 99.9 plus in the quant section and overall across various different exams, CAT, ZET, IFT, right? And as a student, I think I am a good person to understand the perspective from the स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यार स्टूडेंट को क्या डिफिकल्टी आती है एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई टेक एग्जाम एवरी ईयर, राइट? क्योंकि देन आई गॉट टू नो कि यार सिली मिस्टेक क्या होती है, आने के बावजूद भी गलतियां क्यों होती है, what is the time pressure, because if you do not attempt, if you do not force to score good marks in the exam, then you can't ever relate with that. After the exam a lot of things change. During the exam जो pressure होता है, I think repeatedly if I keep taking the exam, I think I get better understanding about the students perspectives also, right? And I appeared for the CAT exam 3 times as a student, so I think that also helps a lot, right? And I highly believe in that anyone can score 99 in QA with the right strategy and the right resources, right? काफी लोग देखते हैं कि यार उनके 10th 12th में क्वांट्स इतना स्ट्रांग नहीं था, या पिछले 3-4 साल से उनके पास क्वांट्स का टच नहीं है. एंड a lot of people also feel कि यार दिस इज द वन ऑफ द सेक्शंस जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, या नॉन इंजीनियर्स हो तो आप जनरली इसमें कम ही स्कोर करोगे. सो आई एम ए नॉन इंजीनियर, एंड in the from the very start I am scoring very good in the quants, and I highly believe in this that if you prepare with the right strategy and with the right resources, strategy भी मैटर करती है, but I think कहाँ से आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, that matters a lot in this section. So if you prepare with the right resources, you can reach to the 99 for sure, right? There is a high chance, right? So starting with the journey and the month-wise plan, right? What is the right journey and what can be the month-wise plan? So I would say कि first 4-5 months, right? जो initial आपके 4-5 months हैं, even if you are a repeater, right? Even if you have scored 99 percentile in the last attempt, or if you are a fresher, right? Fresher as in you are appearing for the CAT for the first time. Start with the very basics, because basics form the key for any question, right? अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो. देन अ लॉट ऑफ थिंग्स कम लाइक स्पीड, हाउ यू हैंडल द प्रेशर, बट स्टार्टिंग पॉइंट आपका बेसिक होता है. अगर कोई नई वैरायटी का क्वेश्चन आया, नए लेवल का क्वेश्चन आया, तो द ओनली वे दैट यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन इज थ्रू द बेसिक्स ओनली. अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो काफी लोगों को बेसिक्स का आइडिया लग जाता है, बट बेसिक के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रैक्टिस करना, राइट? यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर एवरी टॉपिक, चाहे वो आपको टॉपिक आता है चाहे नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, a lot of people are comfortable with the profit and loss, but still I would suggest that you should solve each and every topic, each and every question that is there around profit and loss, or be it any other topic, right? तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, एंड हर साल बहुत बच्चों को टॉपिक समझ आ जाता है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू सोल्व द कैट लेवल क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती. और एक 99 परसेंटाइलर भी अगर मैं कंसिस्टेंटली 99 ला रहा हूँ, इट इज जस्ट नॉट अबाउट माई माइंड सेट और अबाउट माई नॉलेज, राइट? इट इज ऑल्सो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सोल्व मल्टीपल टाइम्स दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन. मैंने बहुत बार वो सेम क्वेश्चन बहुत बार सोल्व किए, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन
कि भाई मैंने वो क्वेश्चन को इतनी बार देख लिया कि नाउ नथिंग इज न्यू फॉर मी, राइट? सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग से और बेसिक्स पे फोकस करोगे, आई थिंक you are almost done with your prep, right? This forms around 50 to 60% of your entire prep. अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो शायद आप मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बट यू विल नॉट हैव एनी कॉन्फर्मेशन कि आप जो फाइनल एग्जाम है वहां पे स्कोर करोगे ही करोगे, राइट? Coming on to the next point, first 4 5 months should be for the basics. Then in the next 2 months, right, revise the concepts, right? Revise the entire thing that you have covered in the last 5 months. Everything should be on your fingertips, right? Then start learning the new concepts, right? एक तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हर टॉपिक्स के, उसके बाद थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स आ जाते हैं या थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, द कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक, राइट? वो रैंडम कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. सो यू कीप लर्निंग ऑन दैम, एंड उसका एक कोई रिपोजिटरी नहीं होता, राइट? यू स्टार्ट गेनिंग नॉलेज फ्रॉम हेयर एंड देयर. अपनी कोचिंग से ले लो, राइट? अपने यूट्यूब से ले सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां पे भी कोई नया डाउट दिखा, उसके अराउंड कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जस्ट कीप ग्रैबिंग, कीप नोटिंग, राइट? मेक ए फॉर्मूला नोटबुक, राइट? सो also start solving the doubt of others and start asking the doubts to your mentors, right? This phase is most important, क्योंकि यहाँ पे आपके डाउट्स क्वालिटी डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं बट आपने आपसे सोल्व नहीं हो रहे होते. सो दिस इज द हाई टाइम, राइट, जब आपको उस पर फोकस करना चाहिए. एंड फॉर्मूला बुक तो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आपको फॉर्मूला बुक तो प्रिपेयर करनी ही चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला बुक में क्या होता है ना, लेट्स से 5 days बिफोर द कैट, 10 days बिफोर द कैट, राइट, आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉर्मूला बुक सर्कुलेट होती हैं कि ये कंपनी की, ये इंस्टीट्यूट की, राइट? दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, बिकॉज फॉर्मूला बुक जो आपने अपने हाथ से बनाई है, दैट विल ओनली हेल्प यू बिकॉज यू नो द थिंग्स अराउंड इट. अगर आप किसी और की फॉर्मूला बुक पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी जेनरिक, राइट? वहां पे नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे, एंड देन यू विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, राइट? फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू शुड स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स, स्टार्ट नोटिंग डाउन द क्वेश्चंस. आई रिपीट एवरी ईयर, स्टार्ट नोटिंग डाउन द क्वेश्चंस. आपको ये नहीं है कि आपके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, कहीं पे सेव कर लिया है ना, वो बहुत बेकार मेथड है. एट द एंड यू विल नॉट इवन बी एबल टू फाइंड द स्क्रीनशॉट, राइट? आप एक नोटबुक पे जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सब नोट करना स्टार्ट करो, सो दैट 2 days बिफोर द एग्जाम, इवन इफ यू हैव लेट्स से 3 4 5 नोटबुक्स फॉर द क्वांट्स, बट एटलीस्ट यू नो कि ये मेरा एक कंसाइज सोर्स है, मुझे यहीं से पढ़ना है, राइट? एंड इट विल हेल्प मी कवर एवरीथिंग. Coming on to the next part, so next stage is next 2 to 3 months should be given to the mocks, right? You should attempt decent number of mocks. Obviously you can attempt any number of mocks, but at least 30 40 mocks so you should attempt for each section, right? Or full length mocks, right? And uska analysis बहुत ज्यादा important है, right? आप with the same level of knowledge, with the same mindset, आप 10 15 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हो, राइट? इफ यू नो हाउ टू एनालाइज द मॉक. और अगर आपको मेंटर मिल रहा है, जो मेंटर आपको अपने साथ एक एनालिसिस करवा रहा है, देन डेफिनेटली आपको बहुत फायदा उससे होने वाला है. एंड ऑल्सो यू स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर मेंटर्स कि यार मैं कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, ये मॉक में कौन सा क्वेश्चन ईजी था, इसमें टाइम प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं. थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट स्किल यू शुड स्टार्ट गेनिंग एट दैट टाइम, है ना? जो आप अपना नॉर्मल स्टडी कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि मॉक्स में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो. एंड समटाइम्स इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपके पास नॉलेज गैप है, समटाइम्स स्किल गैप भी होता है ना? कई बार मॉक अटेम्प्ट करना हमें आता नहीं है, हमारे पास नॉलेज होती है, बट समटाइम्स वी स्किप द क्वेश्चंस, वी सिलेक्ट द रॉन्ग क्वेश्चंस, है ना? वी इग्नोर द राइट क्वेश्चंस. तो ये सब गलतियां कवर अप करनी पड़ती हैं, एंड 2 3 months आर मोर देन इनफ टू कवर दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स, राइट? सो कमिंग ऑन टू द राइट रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना, right? So if you are looking for the quants or LRDI, right, I will be launching my own courses, right, in the February, right? तो वहां पे you can have a look at our QA 99 and the LRDI 99 course. It will be a complete course starting from the basics to advanced. There will be just one batch. We will start in February, and everything revolves around that perspective कि हमने फेब से स्टार्ट किया था. We have a target to score 99 plus in the CAT exam at the end. And I am pretty sure कि if you follow the batch regularly and if you do what I say, if you believe in me, then only join that. Otherwise do not join that, because I am just looking for 200 300 people who are very serious about their preparation, right? Coming on to the next point, have a teacher, right? So teacher can be in the any form, right? It can be a person, right? It can be a mentor, it can be a student, it can be a book also, right? It can be you yourself also, right? If you know that how to prepare, if you are a repeater, if you know the things,
you can be a teacher to yourself, right? But you have to be disciplined, right? You should know the right resources. I would not take the name of the books, but there are a lot of books in the market that do not make sense at the present time according to the current pattern, but still they are there. They are very famous books and a lot of students use that. But the point is that if you do not know the right resources, please do not go for random resources, right? And do not believe in aggressive marketing. There is aggressive marketing by one or two institutes. Do not believe in them, right? Practice is the game changer, right? I see every year that a lot of students struggle in the quant section. Then I just tell them कि okay, tell me the name of topic. वो बोलते हैं कि sir, let's say time speed distance is giving us nightmares. I say कि start practicing 200 300 questions for just that single topic. And when you are done, right, what I mean by done is you should have complete knowledge around that topic, around that question, around that solution. After 300 questions, the the first question that that you are going to see after the 300th question would be exactly same, would be a sub part of those 300 sets, राइट? तो ऐसा नहीं है कैट में बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस आते हैं, है ना? आप देखोगे तो हर क्वेश्चन को आप पास्ट ईयर से खींच सकते हो, पास्ट ईयर से रिलेट कर सकते हो, राइट? सो प्रैक्टिस इज द गेम चेंजर. काफी लोग जो मायोपिक व्यू लेके चलते हैं कि हम लास्ट 2 महीने में 3 महीने में प्रिपरेशन कर लेंगे, या हमें कुछ बहुत अजीब या बहुत एक अलग सी चीज मिल जाएगी, हमें कुछ एक क्रैक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिस इज द की. यू हैव टू डू इमेंस प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर बुक्स, एंड देन ओनली you can succeed in the quant section. Do not expect things to change in the last 2 to 3 months because we have a lot of time. So obviously start preparing from now onwards only. The number of mocks that you should target is minimum 30, right? There is no cap. You can attempt 100 mocks also, right? Material के लिए देखो, material के लिए there are a lot of things, right? For the basics, the best material out there, because I have gone through a lot of materials. The best material that I have found till date is of the time material. Time material is very relevant, right? And it will be available here and there on the Telegram or on the internet. You can find that, right? And if you enroll with me, right, apart from this, I will provide you class assignments, TZ group doubts. So basically in the Telegram, right, start solving the others' doubts and start asking your doubts also to your mentors, right? And that would be a very good activity and it would help you to learn a lot, right? Then past your questions from the 1990 onwards. So from 1990 to 2024, I think there are around 35 years. सारे आपको questions आपने किए होने चाहिए, right? And then mocks and then revision classes. This would be the entire material for your quants prep for the 99 or the 100 percentile, राइट? एंड आप किसी भी लेवल पे हो, फर्क नहीं पड़ रहा. आपको एक टॉपिक अगर एंड टू एंड अगर आपने कवर किया है and you are done with the things which I suggest or which your mentor suggests, definitely I am 100% sure you will be able to ace that topic, right? Maybe आपका expected जितना स्कोर आ जाएगा बहुत ज्यादा हाई नहीं आएगा, बट आई एम प्रीटी श्योर आप जिस लेवल पे हो उससे तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, इफ यू आर गोइंग विद द राइट माइंडसेट एंड द राइट रिसोर्सेस. Now telling with my experience and with the others experience also ki where do the people generally go wrong in their preparation and why they are not able to, even if you do all these things, why you are not, why you might not be able to score very good marks in the quant section, right? So the first thing is lacks mentor or rely on too many different resources. Students को क्या होता है ना, in the student phase, even if I talk about my phase also, I also used to run here and there कि यार मुझे बेस्ट फाइंड करना है, मुझे बेस्ट फाइंड करना है, राइट? पहले मैं यहाँ सर्च करूंगा, वहां सर्च करूंगा, फिर वहां सर्च करूंगा, मैं 10 टीचर्स के बारे में अलग अलग सर्च करूंगा, राइट? देन मैं एक टीचर के बारे में जीरो डाउन करूंगा कि मुझे इससे पढ़ना है. बट जब पढ़ने की बात आती है, राइट, बाय द टाइम ऑफ व्हेन इट कम्स रियली टू स्टडी, राइट, तो तब तक मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, राइट? तब तक मेरे में एनर्जी नहीं रहती, राइट? सो आई वुड से कि फिक्स ए मेंटर कि आपको इसी बंदे से पढ़ना है, आप इसी पे रिलाई करोगे, यू बिलीव इन हिम और हर, राइट? देन ट्रस्ट ब्लाइंडली हिम और हर, राइट? ठीक है, अगर कुछ गलत लग रहा है तो ऑब्वियसली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग योर मेंटर, बट अदरवाइज आई वुड से कि स्टिक टू वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? डू नॉट फॉलो टू मेनी रिसोर्सेज. 10,000 क्वेश्चन कांट एश्योर यू कि आप इतना परसेंटाइल लाओगे, whereas 1,000 or 2,000 quality questions can teach you a lot of things. So the focus should be on the learning part, right? The second is starts with wrong material, mentor or strategy. I have already discussed, right? Choose your material wisely, right? Lacks effort in preparation. This is the real key, right?
काफी लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बट इन टुडेज एरा, राइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इतना कुछ है कि यू जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग देम, यू जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग द राइट वर्ड। आप भागते हो, आई एम अहमदाबाद का बंदा देखूंगा, बेंगलोर का देखूंगा, एक्सपीरियंस देखूंगा, 100% एरर देखूंगा, उससे पढ़ूंगा, इससे पढ़ूंगा, राइट। एंड जब पढ़ने का टाइम आता है, यू लैक दैट क्वालिटी, राइट। पढ़ाने वाला पढ़ा के चला जाएगा, मॉक एनालिसिस कराने वाला, सब चीजें टाइम पे होंगी। If someone has taken money from you, he or she will do the complete job. But the job from your end often finds to be missing, right? आप जो आपसे expected है, बहुत से candidates वो नहीं कर पाते. I do not know why, but I think if you get serious at any stage in life, right, at least for the CAT quants, I am 100% sure, because LRDI VRC के लिए I can say कि वहाँ पे बहुत चीजें different होती हैं, वहां पे कोई श्योरिटी नहीं होती, बट फॉर द क्वांट्स आई एम 100% श्योर यू विल सी इंक्रीज ऑन योर स्कोर्स, राइट। फियर ऑफ मॉक्स, राइट, आई हैव आल्सो ग्रोन थ्रू दिस फेज, राइट, जहां पे मेरे में भी एक फियर था एक मॉक्स का, यार नहीं मैं मॉक नहीं दूंगा, द रीजन इज की आई माइट परफॉर्म वेरी बैड, राइट। एंड द मोमेंट till the moment you keep thinking about this thing, I think you will not be ready for the mocks. For the mocks, first part is ki your mindset should be to handle the pressure of the mock, right? Your mindset should be कि आप मॉक का एक प्रेशर जो होता है ना, कि आपको इतना स्कोर करना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, वीआरसी में क्या होगा, बिकॉज वेन एवर यू अपियर फॉर द मॉक यू विल फाइंड कि यार देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस एंड यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक ऑल्सो, राइट। तो वहां पे जो एक मॉक देने का फियर होता है ना, आई थिंक यू शुड नॉट फियर of giving the mocks, right? Start giving the mocks as soon as they released, right? A lot of people ask me, sir, what is the right time to give a particular mock? I say कि buy the mock, follow their schedule, वो schedule देते हैं कि इस डेट पे ये वाला mock आएगा, right? I would say कि be very serious about that, है ना। preparation नहीं हुआ तो you can delay the mocks by 1 or 2 months, but after that please start giving the mocks, because otherwise you have to give all the mocks in the last 2 months, then you might not have a lot of time to come back or to learn a lot of other things from the mocks. So basically mocks हमें बहुत कुछ सिखाता है, और जितना जल्दी अपनी mistakes को पता कर लोगे कि yeah, these are my mistakes, उतना जल्दी आप you will be able to recover from them, right, or you will be able to learn from them, राइट। कीप्स ऑन कंपेयरिंग द मटेरियल, मैंने ये मटेरियल पढ़ा, मैं नहीं आज ये नहीं पढ़ूंगा, ये अच्छा नहीं है, मैं वो पढ़ूंगा, पिछले साल टॉपर बोल रहा था वो पढ़ा था, ये पढ़ा था वो पढ़ा था, राइट। 400 people every year joins IIM Ahmedabad, right, and everyone has gone through different material, right। कमी मटेरियल में नहीं है, देर इज नो सजेशन फ्रॉम द कैट साइड कि ये मटेरियल करो ये मटेरियल मत करो, राइट। मे बी यू आर लैकिंग दैट फैक्टर, राइट। मे बी मटेरियल सही है, सब कुछ सही है, बट आपकी पढ़ाई उतनी सही नहीं है, मे बी दैट माइट बी द थिंग। सो आई वुड से कि फर्स्ट जीरो डाउन वन मटेरियल, राइट, डू रिसर्च अबाउट दैट, बट इन बिटवीन योर प्रिपरेशन डू नॉट स्विच फ्रॉम वन मटेरियल टू द अनदर, राइट। टू मच इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया डिस्कशंस, है ना, नए नए दोस्त बन गए, नई नई चीजें डिस्कस करनी है, कुछ भी नया खुल रहा है, यू कीप डिस्कसिंग देम, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, तो ये सब चीजें हो सकती है, राइट। माई थॉट्स ऑन क्वांट्स, माई फाइनल थॉट्स ऑन क्वांट्स इज दैट you may feel I am strong at this section, but I built myself for this section, and you can also do the same, right? My mantra is that yes, I have studied a lot for this section, right? This is my strongest section, but still I learn a lot from this section every year, and I practice a lot of questions, right, every year, right। अभी मैंने लास्ट ईयर भी बैच चलाया था, देयर ऑल्सो आई यूज टू सॉल्व a lot of questions, देयर ऑल्सो I used to create a lot of questions, देयर ऑल्सो I used to solve others doubts also, right। So अगर मैं उतना कर सकता हूं तो एज अ कैट एस्पिरेंट जिसको एक बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू दैट, एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, राइट। इट इज वन सेक्शन विच इज लेस अनसर्टेन, राइट, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, बिकॉज यही एक सेक्शन है जहां पे आप बोल सकते हो कि ऐसे टाइप से क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज वीआरसी का लेवल एंड डीआईएलआर का लेवल तुम जज नहीं कर पाते, एंड डीआईएलआर में तो देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वर्क आउट, तो आई विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। Marks can easily be increased with the right mentorship. This is 100% true. Find candidates crying for very simple question. Every year I find a lot of candidates who cry for very simple question during the mocks, during the preparation phase, कि सर ये कैसे होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, है ना। बहुत सारे ग्रुप्स में मैं देखता हूँ, राइट। दैट ओनली सिग्निफाइज, दैट ओनली टेल्स मी कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑल्सो, राइट। बिकॉज वो इतने बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, और तो आप देख सकते हो कि आप किस माइंडसेट के साथ किससे compete कर रहे हो, और जो बच्चे वो चीज फेस कर रहे हैं, दे शुड रियलाइज कि यार
why they are not able to solve the simple questions? कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे कमी हो रही है। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, या तो मेंटरशिप गलत मिली है, टीचिंग गलत मिली है, या फिर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। एंड 90% केसेस में, राइट, इट इज द स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स, राइट। टीचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पढ़ा देगा, बट ऐसा नहीं है ना टीचर प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाने लगा है और ऐसा ही सीआई पढ़ा रहा है, या कुछ कोई और एग्जाम का पढ़ा रहा है, एसएससी का भी पढ़ा रहा है ना, ऐसा नहीं होता, राइट। टीचर ऑलवेज टीचेज एट देयर बेस्ट, राइट। इट इज 90% की स्टूडेंट्स उतना एफर्ट नहीं डाल पाते, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी है, 9-10 महीने की जर्नी है। एवरी डे यू गो टू ऑफिस, यू गो टू कॉलेज, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीड all these VRC passages, this, that, you have to solve the LRDI and this. So often I understand the student phase, but still the point is ki if you start giving efforts to this section, I think you will be able to score much better marks, right? It for sure requires hard works, but it also guarantee you a better result, right? It's okay if QA is not your area, or you are not in touch with the quants from the last 4 to 5 years, but I believe that you still can ace it, and I will be definitely there from the February for all of you, right? And I will keep posting my videos on the channel. Do not worry about that. I will keep posting educational videos also on my channel, right? That's it from my side. Thank you for being such a nice audience. Definitely subscribe us on the YouTube so that you do not miss the real gyan from our side. And I personally do not like giving too much gyan, but this is the starting phase. But after 3 4 months, I will start with the questions only concept videos. Right? Join our Telegram and the WhatsApp. Links are in description, and also follow us on the Instagram. Thank you. Bye bye, and best of luck for your new journey. That is CAT 2025. Thank you.